Hello, everybody. As in the previous lecture, we have discussed part 2 that talked about all the important institutions that are established under the Registration Act. What were they? The Inspector General of Registration, Registrar, Sub-Registrar, and the Inspector of Registration Offices. Today, we are going to deal with very important aspect that talks about the registrable documents, that is section 17 and 18, and also part 10 that talks about the effect of non-registration of those documents. So let's move towards part 3, that is the registrable document. This is the very important section, that is section 17. Now, if you people have gone through the TPA Act, you will see that there are few sections that talk about the compulsory registration of the documents whose value is 100 or above 100. That can be sale, lease, gift, and also section 53A. So TPA has to be read along with Registration Act for the better understanding that what is the registration, why is the registration important, and what are the consequences if you don't get your document registered, which are compulsorily mentioned under section 17. So now, under section 17, the word shall is used, that there is a list of following documents that has to be registered. Now, what are those? First, they talk about the instrument of gift of immovable property. Please clearly see that it is only written immovable property, whereas in TPA, gift includes movable property and immovable property. Now, B talks about any other non-testamentary instrument, and that non-testamentary instrument is either creating, declaring, assigning, limiting, or extinguishing what? Any right, title, interest that can be in present or future, vested and contingent in immovable property. What is the catch? The catch is the value of the non-testamentary instrument or that property should be 100 or upwards. Now, the similar point you will see under section 18, and that talks about that other non-testamentary instrument, again the same thing, but the value should be less than 100. So this is the catch, or you can see that there is a difference between section 17 and 18. So we'll be doing it right now only, so for the better understanding. Now, the C point says that acknowledgement of consideration, what rights, things that have been created previously, there has to be a registered deed that says that the acknowledgement for the consideration, again, the property which is 100 or above 100, that is compulsory registered. Again, this point you will see in section 18. And if the property is below 100, then you do not, it's not compulsory that you have to register. Now we talk about point D, that talk about lease of immovable property. So in only these three cases, it is compulsory to have your lease deed registered. When there's a lease of year-to-year lease, when the lease is exceeding 1 year, when you are lease reserving yearly rent. But again, if you read section 18, it talks about it is optional whether you want your lease to be registered if the lease is for less than 1 year. Then the point E talks about where there is a decree of a court, if the court awards any award, and again the movable property is above 100 or upwards, it needs to be transferred. But again, if you read section 18, it says if the property is below 100 rupees, it need not to be mandatory registered. Now, the proviso, there's one proviso added which talks about that the state government has the power to exempt the lease that is more than 500 and its annual rent is 50 and will inform it in the official gazette. Now, again, it is important that section 17, there is this amendment that is 1A that talks about it. It is important that under section 53A, what is section 53A of TPA? That is the part performance. It has to be registered to give a legal effect. So right now हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि सेक्शन 17 में कुछ फॉलोइंग लिस्ट दे रखी है जिसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है. जब मैं सेक्शन 17 डील कर रही थी तो मैंने उसके साथ ही साथ आपको सेक्शन 18 का कंपैरिजन करवाती गई सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर जिसने सेक्शन 17 अच्छे से समझ लिया वो सेक्शन 18 भी उसको आ जाएगा. नाउ सेक्शन 17
talks about that it is mandatory for you to get your documents registered. But what if these compulsory registration has not been done? Then what is the non-effect of such registration? That, let us move to the next slide, that talks about section 49, that talks about the effect of non-registration. So basically, when the property was said to be registered and you don't register such properties, the effect is that there will be no effect to that property. That property has changed, the property has moved from one person to another, that there will be no effect to that property. Then there will be no legal authority. Like for instance, now for this point, I would again move to section 17. That is Section 17, subclause 3 specifically mentioned that if you are adopting a son, you need to get it registered. There has to be a registered deed wherein all such rights and liabilities will be mentioned. And that is why Section 49 is saying if you don't get that registered, then there will be no such legal authority. Again, Section C says not admissible as evidence. It will not be considered to be admissible as evidence. Now, there is a proviso to section 49 that this says that the transfer will not affect, but the contract can be used as an evidence for enforcing any right, anything in the specific relief act. Now, section 17, if you will read it, the important part is covered, but there are subsection 2 that says that these documents are not required. So you can, I have mentioned the list, you can go and read that list. Now, yes, section 18, that is documents where registration is optional. So if you see, I've already mentioned that non-testamentary instruments, that's value is less than 100, acknowledgement of such immovable property whose considered, again, it is less than 100, then lease of immovable property, lease not exceeding 1 year. Then the decree, order, and award, again, the property is less than 100. Instruments relating, now these are the 3 important points that are additional in section 18 that talks about instruments relating to movable property. Then wills and other documents that are not mentioned under section 17 will come under section 18 and that are optional. Now we come to section 19. What is section 19? Section 19 is basically giving, it is a duty upon the registrar and also a right of the registrar that the registrar, the sub-registrar, the registering officer does not understand if the language written in the deed is not अंडरस्टूड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर या फिर वो कॉमनली यूज नहीं होती है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा उस रजिस्ट्रेशन डीड को लेने से. लेकिन एक एक्सेप्शन रूल है कि अगर उसका आप ट्रू ट्रांसलेशन दे दो उस लैंग्वेज का और एक ट्रू कॉपी दे दो उस डॉक्यूमेंट की, तो फिर सब रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको रजिस्टर कर सकता है. So if the language is not understood by the registering officer, he can refuse to accept it. Now, section 20 basically says that कि अगर आपने कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर को एक डॉक्यूमेंट दिया और वो रिफ्यूज कर सकता है वो लेने से. क्यों? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में ना कुछ ब्लैंक्स थे, कुछ इरेजर्स, कुछ ऑल्टरेशंस थे, तो वो लेने से मना कर सकता है. लेकिन अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर आप उसको अटेस्ट कर दो, द पर्सन्स हु आर एग्जीक्यूटिंग वहां पे अपना सिग्नेचर कर दे और रजिस्टरिंग ऑफिसर नोट करे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कि ये इरेजर्स थे, ये ऑल्टरेशंस थे, तब इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने मेंशन कर रखा है कि ट्रांसपेरेंसी रह पाए, एक ऑथेंटिकेशन ऑफ चेंजेस जो भी चाहिए होते हैं वो मेंटेन रहें. सेक्शन 21, सेक्शन 22 बेसिकली बात क्या करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी. जनरल रूल यही है कि कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट नहीं जो रिलेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा अनलेस वो सफिशिएंटली डिस्क्राइब्ड हो कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ इसी प्रॉपर्टी की बात हो रही थी. सबसेक्शन 2 बेसिकली कहता है कि जो हाउसेज हैं इन टाउन्स उनको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. कोई उनकी रोड का कोई स्पेसिफिक नाम हो उससे मेंशन कर सकते हो, उनका डायरेक्शन दे सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग या फॉर्मर ऑक्यूपेंसीज है कोई फेमस वहां से आप मेंशन कर सकते हो, या हाउस नंबर अवेलेबल है तो. सबसेक्शन 3 कहता है कोई अदर प्रॉपर्टी, लैंड या हाउसेस
अगर उसका कोई प्रॉपर्टी का नाम है तो वो लिख सकते हो, टेरिटोरियल डिवीजन लिख सकते हो, कोई एरिया हो, सुपरफिशियल कंटेंट वो, बाउंड्री लिख सकते हो, ऑक्यूपेंसी डिटेल्स लिख सकते हो, और अगर वहां पर गवर्नमेंट मैप या सर्वे अवेलेबल है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ दे ऑल्सो सेज दैट कि अगर कोई नॉन टेस्टेड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैप या प्लान है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसकी ट्रू कॉपी लगाओ। अब आता है सेक्शन 22 जो बेसिकली कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स और सर्वेज। सो वेयर इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि जो ये हाउस डिस्क्राइब किया गया है इसको हम इसका रेफरेंस गवर्नमेंट मैप या सर्वे से ले सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फॉर इंस्टेंस आपने सेक्शन 21 सब क्लॉज 2 एंड 3 जो हाउसेज इन टाउन एंड अदर हाउसेज एंड लैंड्स की आपको अगर हो पाया तो डायरेक्शन लिखना था, अगर हो पाया तो आपको एग्जिस्टिंग फॉर्मर ऑक्यूपेंसीज लिखनी थी, स्ट्रीट का नाम लिखना था। अगर ये सब जो फॉर्मेलिटीज है आप नहीं कर पाते हो लेकिन तब भी आपने सफिशिएंट डिटेल्स लिख दिए कि आपकी प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज व्हाट योर पार्ट 3 सेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 10. What is the part 10? Part 10 talks about the effect of registration and non-registration. So basically section 47 एक बहुत important, now this is also important, ये prelims में आ सकता है कि ये question पूछा जा सकता है कि जो आपका time है from which the registered document operate, वो time कौन है? वो time तब से count किया जाएगा जिस दिन आपने registration करवाया, ये वो time तब से count किया जाएगा जिस दिन सारी parties ने मिलकर उस deed को execute किया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो टाइम होगा आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट करेगा जिस दिन आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया था, ना कि उस दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ था। यू कैन रीड द सेक्शन। अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल ऑपरेट फ्रॉम द टाइम विच इट वुड हैव कमेंस्ड to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of registration. I hope it is clear. सेक्शन 48 बेसिकली सेक्शन 48 एंड 50 दो चीजों की बात करता है। 48 क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और अगर एक ओरल अग्रीमेंट है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी मिलेगी। बट एक्सेप्शन ये है कि ऐसा कोई ओरल अग्रीमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हो, जो अकम्पनीड है डिलीवरी ऑफ पोजेशन से और वो किसी कस्टम या यूसेज में ऐसा माना जाता है कि वो एक वैलिड चीज है, तो फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या अगर ओरल अग्रीमेंट होगा तो ओरल अग्रीमेंट को वहां पे प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन जनरल रूल क्या है कि इफ देयर इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड इफ देयर इज एन ओरल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल। दिस इज द only thing, only the crux you need to know under section 48. Section 49 I've already dealt with section 17 and 18. नाउ सेक्शन 50 बोलता है कि अगर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सो द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल। फॉर इंस्टेंस अगर ये प्रॉपर्टी है और मैंने इसका अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवा लिया, फिर उसके बाद मैंने इसी प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवाया, सो द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट will prevail over the unregistered document. This is what section 50 is saying. So that's it. That's all for today. Thank you very much.